So we had to continue with gravitation. We had done normal gravitational force, Newton's law of gravitation पे questions हमने किया था. आज acceleration due to gravity वाला part करेंगे और उसके आगे करेंगे. So acceleration due to gravity at surface of Earth. So consider a body of mass m lying on the surface of Earth. For calculating gravitational force of Earth on bodies outside the surface of Earth, whole of its mass can be supposed to be concentrated at its center. Therefore, gravitational force of Earth on the body is given by F is equal to gmm upon r square. F is equal to gmm upon r square. So where m is the mass of Earth, r is radius of Earth, g is acceleration due to gravity, and force on the body due to Earth is given by force is equal to mass into acceleration. So m into g हो गया. अगर इस ऑब्जेक्ट का मास m है और मास ऑफ अर्थ कैपिटल m है, तो f हमें पता है, g इसको इक्वेट कर देते हैं, g mm by r स्क्वायर को mg से, स्मॉल m और स्मॉल m कट गया तो स्मॉल g इज इक्वल टू gm by r स्क्वायर. तो वेयर m इज द मास ऑफ अर्थ एंड r इज द रेडियस ऑफ अर्थ, अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ पे बात कर रहे हैं. सो g इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ अगर हम लोग को निकालना होगा, ये देखो मास और रेडियस के टर्म्स में है g का वैल्यू. अगर डेंसिटी के टर्म्स में निकालना है, मास को हम लोग 4/3 पाई आर क्यूब लिख सकते हैं. अब इसको कैंसिल करेंगे तो एक r बच जाएगा, तो 4/3 पाई रो इंटू जी आर, ये हमारा डेंसिटी के टर्म्स में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है. तो ये दो इक्वेशन आपको, दो फॉर्मूलेज याद करने हैं, एक मास और रेडियस के टर्म्स में और एक डेंसिटी और रेडियस के टर्म्स में. नाउ from the expression g is equal to small g is equal to gm by r square, right? So gm by r square or 4/3 pi rho gr, it is clear that the value of g depends upon the mass, radius and density of the planet. It is independent of mass, shape and density of the body placed on the surface. जिस body पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, उसके मास, शेप और डेंसिटी पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं वेरी करता, नहीं चेंज करता है, डिपेंड करता है. In other words, all bodies on a given planet experience same acceleration irrespective of their masses. So whatever the mass of the bodies, the acceleration due to gravity will be same due to a particular planet or due to a particular mass. The greater the value of m by r square or rho r, तो यहाँ पे m by r square का जितना वैल्यू होगा या rho r का जितना वैल्यू होगा, the greater will be the value of g for that planet. Acceleration due to gravity is a vector quantity. Acceleration, we know that is a vector quantity and its direction is always towards the center of the planet. तो जिसके वजह से acceleration due to gravity जिस planet के वजह से निकाल रहे हो, उसके सेंटर के तरफ डायरेक्टेड होता है. SI unit of acceleration due to gravity, because it is acceleration, it will be meter per second square and its dimension is LT minus 2. When mass of the planet changes without any change, when the radius of the planet changes without any change in the mass, then g is inversely proportional to square of the distance. If mass is constant, तो inversely proportional to square of the distance. Or for small changes, तो what you do, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो जो एरर वाला फॉर्मूला होता है डेल्टा जी बाय जी इज -2 times डेल्टा आर बाय आर. Now if both mass m and radius r of a planet changes by a small amount, so delta g by g, mass m के चेंज की वजह से डेल्टा m by m -2 डेल्टा r by r, ये स्मॉल अमाउंट से अगर मास और रेडियस दोनों चेंज करता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऐसे वेरी करेगा. Now acceleration due to gravity at height h above the surface. Sir. Yes. सर पिछले वाला पेज दिखा दिया, मैं नोट कर रहा था. फाइन सर. मैं शेयर भी कर लूंगा, पिछला वाला भी क्लास का शेयर कर लूंगा. आई एम सॉरी आई कुड नॉट शेयर लास्ट वीक.
तो मैं सारा ही जितने क्लासेस लिए सबके जितने स्क्रीनशॉट्स ले रहे हैं वो साथ में पीडीएफ बना के शेयर कर, आज ही कर दें, ठीक है। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। अब सरफेस ऑफ अर्थ के हाइट h पे अगर हम लोग को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना, एक मास m एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, from the center of the earth. Let h be the height of the body from the surface of the earth, right? So let this h is the height of the body from the surface of earth. So total distance from the center of earth is small r, which can be given as capital R plus h. Small r is equal to capital R plus h. Gravitational force on the body is given by F is equal to gmm upon r square. सो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F, दिस इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर. So let gh is acceleration due to gravity at a height h. So this is acceleration due to gravity at a height h. Force on the body due to earth is given by m into gh. F is equal to m into gh. From equation 1 and 2, we know that gh will be equal to gm by r square. तो यहाँ पे r के जगह कैपिटल R प्लस h सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट h विल बी gm by r प्लस h स्क्वायर. तो जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होता है दैट इज gm by r स्क्वायर, और किसी हाइट पे जो है दैट इज gm by r प्लस h स्क्वायर. तो ये इसको अब हम लोग क्या करते हैं, ये जो इक्वेशन 4 है इसमें हम लोग ये फिफ्थ वाले इक्वेशन को यूज करते हैं. तो इफ वी डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इसको अगर हम लोग आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो जी एम बाय आर स्क्वायर को स्मॉल जी लिख के आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर कर दिया. अब इसको तो दिस इज यू नो द रिलेशन बिटवीन acceleration due to gravity at height h and acceleration due to gravity at the surface of the earth. If h is very very less than r, okay, so let's say this h is very very less than कैपिटल आर, मीन्स सरफेस ऑफ अर्थ के आसपास ही है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है. तो उस केस में जो जी एच इज इक्वल टू जी आर बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर है, बिकॉज आर, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि आर को डिवाइड कर देते हैं दोनों को. तो ये आर प्लस एच, इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज जी इंटू, इसके बाद का स्टेप में एक बार लिख ले रहा हूँ, जी इंटू आर प्लस एच अपॉन आर रेज टू द पावर -2. हम लोगों ने यहाँ रेसिप्रोकल किया तो पावर में -2 लगा दिया, इंडिविजुअली डिवाइड किया तो दिस इज 1 प्लस एच बाय आर रेज टू द पावर -2, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है. अब यहाँ पे क्या है, बिकॉज h इज वेरी वेरी लेस देन r, दिस इज नेग्लिजिबल, है ना, दिस वैल्यू इज वेरी वेरी लेस देन 1 बेसिकली. So since h is very very less than r, this is very very less than 1. तो जब बाइनोमियली एक्सपैंड करते हैं तो ये -2 आके मल्टीप्लाई हो जाता है, जो पावर है वो आके मल्टीप्लाई हो जाता है. आप लोग ने पढ़ा होगा 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर n को 1 प्लस एन एक्स हम लोग लिख लेते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन में, व्हेन x इज वेरी वेरी लेस देन 1. तो सेम चीज हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं, जी एच इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाय आर हो गया हमारा, right? So acceleration at height h will be equal to g into 1 minus 2h by r. So एक्सक्यूज मी सर. yes, सर मुझे ये -2 नहीं समझ में आया, बाकी तो आ गया. ये तो अपना उसमें लिखते हैं कहाँ पे थ्योरम में, तो ये 2 जो लिखते हैं. -2 लिखा है ये यस सर. इस स्टेप में ना, देखो यस सर. ये क्या है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, g into r बाय r प्लस एच का होल स्क्वायर, राइट. अब अगर हम लोग देखो जैसे 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है, इसको हम लोग x टू द पावर -2 लिखते हैं ना, अगर इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा. यस सर. तो यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल जब लिखेंगे तो ये r प्लस एच ऊपर हो जाएगा, r नीचे हो जाएगा, और यहाँ पे पावर -2 हो जाएगा. इसको इसका रेसिप्रोकल ये है ना, ओके. यस सर. यस सर. तो इसीलिए पावर नेगेटिव हो गया.
तो बेसिकली रिलेशन याद रखो, लेकिन ठीक है, मतलब ये सब भी आना चाहिए क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं तो उसमें यूज होता है। तो रिलेशन बस ध्यान रखो, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट ज्यादा तुम लोग को फोकस करना है कि हाइट एच पे अगर एच इज वेरी वेरी लेस देन आर तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो एक तो ये नॉर्मल हो गया कि हाइट एच पे एग्जैक्टली क्या होगा वैल्यू, ये तब है जब एच इज कंपेरेबल टू आर, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के आसपास की वैल्यू, मतलब बहुत ज्यादा छोटा वैल्यू नहीं है एच। अगर एच का बहुत ज्यादा छोटा वैल्यू है तब ये यूज करेंगे हम, अदरवाइज ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो तुमको याद ये वाला फॉर्मूला करना है, ये वाला फॉर्मूला करना है, और ये तो तुमने ऑलरेडी, ये जो जी, ये जो है ये तो ऑलरेडी है ही, हम लोग 9th क्लास से याद किए हुए। तो ये 3 फॉर्मूले पे फोकस कर। Now variation of g with height. So as we go above the surface of the earth, the value of g decreases because gh is inversely proportional to 1 by r square. So if r is infinity, then gh is equal to 0. Infinite distance पे acceleration due to gravity क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. That is, at infinite distance from the earth, the value of g becomes 0. Now absolute decrease in g with height. So for h very very less than r, delta g is g minus g dash. This is 2gh upon r. So ये देखो क्या है, g at height h हम लोग निकाल चुके हैं, g इंटू, जब when h is very very less than r, तो हम लोग का फॉर्मूला था 1 minus 2h by r, ठीक है। और सो अब हम लोग इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, g माइनस जी इंटू 2h अपॉन आर। अब अगर हम लोग को डेल्टा जी निकालना है, डेल्टा जी विल बी जी माइनस जी एट हाइट एच, तो जी माइनस, सो जी माइनस जी प्लस ऑफ जी इंटू 2h बाय आर। बेसिकली इसको हम लोगों ने पूरे को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना। तो समझो ये जी माइनस जी इंटू 2h बाय आर, माइनस साइन को अंदर लेके तो ये प्लस हो गया, जी माइनस जी कैंसिल हो गया, तो दिस इज जी into 2h upon r. So this is what is given here. Delta g is 2hg upon r. फ्रैक्शनल डिक्रीज क्या होगा, डेल्टा जी बाई जी इज 2h बाय आर हो गया। भाई जी को लाके डिवाइड कर दोगे यहाँ पे, तो डेल्टा जी बाई जी इज 2h बाय आर। और परसेंटेज डिक्रीज क्या हो गया, डेल्टा जी बाई जी 2h बाय आर इंटू 100%। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब ये 9th क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है। ये कह रहा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज्ड बाय 1%। तो मतलब अभी तुरंत हम लोग कर रहे थे 1%, मतलब डेल्टा जी बाय जी इंटू 100 इज इक्वल टू 1%। डेल्टा जी बाय जी अभी हम लोगों ने निकाला 2h बाय आर इंटू 100 इज इक्वल टू 1। सो हम लोग को निकालना है h, हाइट निकालना है, h इज इक्वल टू 1 by r by 200 basically. So r by 200, this is equal to r 6400 kilometers है। Let's say ये दिया हुआ होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया हुआ होगा आपको 6400 kilometer by 200. So this is 32 kilometer from the surface of Earth. Is it clear? लिख लिया सबने? Yes, sir. 10th वाला क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून if its radius is 1/4 the radius of earth and mass is 1/80th the mass of the earth। तो देखो स्मॉल g is equal to gm by r square, ये हम लोग को पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ।
अब मून पे gm इज इक्वल टू g मास ऑफ मून बाय रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर. मास ऑफ मून कह रहा 1/80th द मास ऑफ अर्थ, तो g m by 80 हो गया डिवाइडेड बाय रेडियस इज 1/4 द रेडियस ऑफ अर्थ, मतलब r by 4 का होल स्क्वायर. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं gm upon 80 by r square by 16. So this is gm upon 80 into 16 by r square, 1 by 5 gm upon r square. So this is equal to g upon 5. Option 2. ठीक है, ये नहीं कि हम लोग बचपन में याद किए थे कि 1/6 होता है, सीधे मार दिया. जो डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से कैलकुलेट करके निकालना है. क्लियर बच्चों? यस सर. यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए. आई विल कम इन 2 minutes. आप अटेम्प्ट कीजिए. भैया क्रॉस चेक करोगे आंसर? आ गया आंसर 11th का? यस सर. क्या है? सर ऑप्शन 1. 12,800. हाँ ठीक है. देखो, at what height above the Earth's surface the acceleration due to gravity will be 1/9 of its value of Earth's surface. Radius of the Earth is 6,400 kilometer. तो अब हम लोग नॉर्मल जो सॉल्व करते हैं, सी g डैश acceleration, so g at height h is equal to gm by r plus h का होल स्क्वायर. सो अब हम लोग को जो वैल्यू निकालना है, और acceleration due to gravity on the earth's surface is gm upon r square. ठीक है. सो अब ये वैल्यूज हम लोग अगर डालेंगे, ठीक है, सो 1/9 gh is 1/9 of स्मॉल g. वैल्यू अब पुट कर लेते हैं, मतलब gm by r plus h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 gm by r square. gm और gm कैंसिल हो गया, so we have
9r square is equal to r plus h का होल स्क्वायर. दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर लेंगे तो 3r इज इक्वल टू r प्लस एच और h इज इक्वल टू 2r, है ना. r को उस तरफ ले जाएंगे, h इज इक्वल टू 2r और h इज इक्वल टू 2 इंटू 6400 12800 किलोमीटर. तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें. Good morning, sir. Sorry for being late. It's okay. We started. We are continuing with the gravitation part. So we have done one particular topic. I'll share the videos and other thing you can see later on. Okay. So now acceleration due to gravity at depth d below the surface of Earth. तो अभी हम लोगों ने height h पे निकाला. Now we'll find acceleration due to gravity below the surface of Earth. Let's say d distance below the surface of Earth अगर हम लोग को निकालना है. So acceleration due to gravity at the surface of Earth we know is gm by r square, and अगर इसको density के terms में लिखें तो 4/3 pi rho gr. Density वाला चीज यहाँ पे ज्यादा काम करेगा क्योंकि अब जब यहाँ पे हम लोग को acceleration due to gravity निकालना होगा ना, तो we have to consider only this much of mass. मतलब इसके अंदर जो ये sphere है, मतलब at this point, so इस point को periphery रख के अगर हम लोग एक दूसरा sphere बनाएं तो ये वाला जो पोर्शन है इसके मास के वजह से यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालेंगे. इस वाले पोर्शन का कोई भी रोल यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को निकालने में नहीं होगा. सो लेट जीडी is equal to acceleration due to gravity at a point P inside the Earth at a distance r from the center of Earth. So distance from the center of the Earth is small r. D is depth of the point P from the surface of Earth. So D is the depth of point P from the surface of Earth. Small r is equal to this. Small r is equal to capital R minus D. This whole radius is capital R and this is D. So small r will be equal to, this distance will be equal to capital R minus of D if we subtract this depth. So acceleration due to gravity at a distance r, we know that from the surface of Earth is acceleration due to gravity at depth d will be 4/3 pi g rho small r. Small r we can put the value as r minus d. So this is 4/3 pi g rho r minus d. Now from equation 1 and 2, so we know that acceleration due to gravity small g की वजह से ये है, और मतलब at surface of Earth ये है और at depth d ये है. So if we substitute the value we get, so what we do is we take out r common here. So this will become 4/3 pi g rho r into, if we take r common, this will become 1 minus d by r, right? There is no r here, so we'll have to divide r here. So now this 4/3 pi g rho r, this whole thing is basically acceleration due to gravity. Okay, so Betsy, we calculated this value. See, we have gm by r square. Mass ko we can write, this is acceleration due to gravity. This mass can be written as 4/3 pi r cube. Okay, 4/3 pi r cube into density rho. So this is what mass is, volume into density. So this is
this whole thing is replacing capital M divided by R square. So if we cut this, this will become G 4 by 3 G into pi into R into rho. So this is what 4 by 3 pi rho G R. So we are using this now. This whole thing can be written as small g. So acceleration due to gravity at depth d, gd is 1 g into 1 minus d by r. This is acceleration due to gravity at depth d. Is it clear? So variation in G with depth D is GD is proportional to R minus D. So if you see G at depth D, we had calculated G into 1 minus D upon R. This can also be written as G into R minus D upon R. So G and R is constant. What is the variable? R minus D. So G at depth D is proportional to R minus D. Okay. So it is clear that if D increases, the value of G decreases. ठीक है. तो D अगर increase करोगे D का value, तो you are subtracting a bigger value from R. So that means the value of G will decrease. So as the depth increases, the value of G decreases. So maximum acceleration due to gravity is on the surface of the earth. जब आप surface of earth से ऊपर जाओगे, when you go at a height h, then also G decreases. And when you come below the surface, that is when you go to a depth d, then also value of small g decreases. So at the center of the earth, acceleration due to gravity gd is equal to 0. That is acceleration due to gravity at the center of the earth becomes 0. Absolute decrease, so delta g is equal to g minus gd. So center of the earth pe, this d will become equal to r. So that means acceleration due to gravity at the center of the earth will be equal to 0. And absolute decrease delta g is equal to g minus gd, right? So we have g minus g at depth d. So this is g minus g at depth d means g plus of dg by r. G minus g cancel ho gaya, so this is dg by r. Now fractional decrease will be d by r and percentage decrease will be d by r into 100%. If h is very less than r, rate of decrease of gravity outside the earth is double to that of inside the earth. Okay. So अभी हम लोगों ने निकाला था percentage decrease जब हम लोग ऊपर जा रहे थे height पे, and when h was very less than r, then it was, so delta g by g is equal to 2h upon r. और यहाँ पे क्या है d upon r. मतलब जो height h जाएंगे, है ना, h ऊपर जाएंगे तो वो 2 times h by r होगा, और h नीचे जाएंगे मतलब डेप्थ में अंदर जाएंगे तो that will be h by r. So यही चीज कह रहा है कि rate of decrease of gravity outside the earth is double to that of inside the earth. So when you go inside means depth d में अंदर जाएंगे तो that will be d by r, and if you are going at height h, that will be 2h by r. So this is only when h is very less than r. So variation in g with distance r from center of the earth is given by gr is 4 by 3 pi into g rho r. ये हम लोग already कर चुके हैं. Center of the earth पे r 0 है तो g 0 हो जाएगा. R less than
small r पे g is proportional to r, right? So for r less than capital R, मतलब surface के अंदर अगर हम बात करें, that is 4/3 pi g rho r. So this is directly proportional to r. That means it varies linearly. The acceleration due to gravity increases linearly with r. So जैसे जैसे linearly ये increase करता जाए, यहाँ पे r is equal to r पे this is maximum, और उसके बाद फिर ये it will decrease. Okay. So उसके बाद ये जो है जैसे जैसे बाहर जाएंगे, we know that g is, so acceleration due to gravity at height h is gm by small r का whole square, right? Small r is capital R plus h. So because it is g at height h is inversely proportional to square of the distance from the earth, so that's why this curve will be like this, you know, a curve which is dhire dhire going to, at infinity it will become zero. And here, because inside the surface of earth it is directly proportional to r, you will get a straight line. So this is the graph which explains the acceleration, variation of acceleration due to gravity with a distance r from the center of earth. So radius of earth पे maximum, उससे less पे it is linearly related, and उससे ज़्यादा, when r is greater than r, then it is, you know, inversely proportional to square of the distance, and that is being shown by this kind of graph. Is this clear, the graph portion? Yes, sir. Yes, sir. Now the next one is at which depth from Earth's surface acceleration due to gravity is decreased by 1%. So see, we know that delta g by g into 100 is equal to d by r into 100, which is equal to 1. So हमें d निकालना है, this is r by 100. So 6400 by 100, that means 64 kilometers. So at a depth 64 kilometer, the acceleration due to gravity is decreased by 1%. Every 64 kilometer, the acceleration due to gravity decreases by 1%. Now, variation in small g due to shape of Earth. Okay. So shape of Earth के हिसाब से variation, we know that the Earth is not exactly spherical, but it is flattened at the poles. So radius at the pole is less than radius at the equator. And we know that since g is inversely proportional to the square of the radius of Earth. Okay. So that means at pole, it will be, the value will be more because the radius is less, and the equator, the value will be less. So the earth is elliptical in shape, it is flattened at the poles and bulged out at the equator. Now we know that g is inversely proportional to square of the radius, right? Therefore the value of g at the equator is minimum and the value of g at the poles is maximum. So g is minimum here and g is maximum at the poles. So we know that acceleration due to gravity on equator, it will be gm by re square, and at poles it will be gm by rp square, right? Now we know that acceleration due to gravity, तो इससे since तुम लिखोगे since re is greater than rp, this implies ge is less than gp.
Now, acceleration due to gravity at poles by equator is equal to RE square by RP square. Now, since RE is greater than RP, so GE is less than GP. Now, numerical value of RP is 21 kilometer less than RE. Okay, so the difference between gravitation, acceleration due to gravity at poles and equator comes out to be 0.018 meter per second square. Now, वेरिएशन इन जी, हम लोगों ने हाइट के हिसाब से वेरिएशन देख लिया, डेप्थ के हिसाब से वेरिएशन देख लिया, शेप ऑफ अर्थ की वजह से वेरिएशन देख लिया. नाउ रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या वेरिएशन है, वील सी दैट. सो दिस इज द फोर्थ फैक्टर ऑन विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड्स. So consider the earth to be a perfect sphere of radius r, mass m and center o. It revolves with a uniform angular velocity omega about the polar axis. So this is angular velocity omega. Now, as the earth revolves, every particle lying on its surface also revolves along the horizontal circle with same angular velocity omega. The center of the circle lies on the polar axis north south. Okay. Now, ये जो center C है, that lies on this polar axis. So हम लोग को इस पे नहीं जाना है, जो derivation पे. Acceleration due to gravity at any point is given by g dash is equal to g minus r omega square cos square lambda. Lambda क्या है? Lambda इसका latitude कहलाता है. This is known as the latitude. ठीक है, लैटिट्यूड एंगल लैम्डा. सो लैटिट्यूड एंगल लैम्डा पे मतलब कोई पॉइंट P है तो इसको सेंटर से ज्वाइन करेंगे और इसके इक्वेटर से जो एंगल बना रहा होगा दैट इज नोन एज लैटिट्यूड एंगल लैम्डा. सो ये जो cos स्क्वायर लैम्डा है, दिस मतलब सो बेसिकली wherever the particle is, lambda will keep on changing and hence acceleration due to gravity will change, right, according to the latitude as well as the rotation. So this is the effect of rotation. G dash is g minus r omega square cos square lambda, where lambda is the latitude angle. So when lambda is lambda zero कब होगा? It means at equator acceleration due to gravity है ना, at equator g minus re omega square हो गया. ठीक है. और if latitude angle is 90 degree, it means it is at poles. So g dash maximum जो gp is equal to g हो जाएगा. cos 90 हमें पता है 0 होता है, तो gp is equal to g. So acceleration due to gravity is greater than poles is greater than acceleration due to gravity on earth. So gp minus g जो rotation के वजह से जो change है, that is 0.034 meter per second square due to rotation. As we move from equator to poles, the value of g increases. Okay, difference in value of g at pole and equator due to combined effect of shape of earth and rotation. दोनों का effect को combine कर दो, ये 0.034 और पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा था 0.018 was due to the shape. तो इन दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो that means 0.052 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का चेंज होगा पोल्स और इक्वेटर के ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में. Is it clear, बच्चों? सर जो गोल्ड होता है वो पोल्स पे ज्यादा इसलिए वे करेगा ना क्योंकि उस पे जीपी ज्यादा होता है. हाँ. Now उसके अलावा if rotation of earth suddenly stops, then acceleration due to gravity increases at the place on the earth except the poles. है ना, poles पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी जगहों पे acceleration due to gravity increase कर जाएगा. Angular velocity for weightlessness, है ना. So just
Angular velocity for weightlessness g dash is equal to g minus m re omega square cos square lambda. ठीक है. So suppose angular velocity increases to a value where apparent weight of the body is 0, है ना. तो g dash अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब g मतलब 0 is equal to g minus re omega square cos square lambda. So we have to मतलब जो स्पीड ऑफ रोटेशन इतना होना होगा अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होना है तो. नाउ एट इक्वेटर लैम्डा इज 0 डिग्री, राइट. तो cos 0 1 हो गया. ओमेगा शुड बी इक्वल टू रूट अंडर g बाय r, दैट इज 1 by 1800 रेडियंस पर सेकेंड. सो 17 टाइम्स द प्रेजेंट एंगुलर स्पीड जब हो जाएगा तो ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वहां पे 0 हो जाएगा. At weightlessness, time period of Earth's rotation t will be 2 pi by omega, है ना. तो 2 pi by omega, that means ये ओमेगा का जो वैल्यू है इसमें पुट कर लो 1.4 आवर्स. मतलब टाइम पीरियड 1.4, अभी 24 आवर्स का है, वो 1.4 आवर्स हो जाएगा, राइट. तो फिर जो है वेटलेसनेस हम लोग, देयर विल बी नो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. Now, 14th example is the speed with which the Earth would have to rotate on its axis so that person on the equator would weigh 3/5 as much as at present will be. So, speed with which the Earth would have to rotate. तो आप ये देखिए कि जो इक्वेटर पे हम लोग को करना है, तो इक्वेटर पे जी ई इज इक्वल टू GE is equal to G minus RE into omega square, right? So G at equator, so RE into omega square is equal to G minus G, 3/5 as much as present, मतलब G minus 3 by 5G. This is 2 by 5G हो गया. तो omega square is equal to 2 by 5G divided by RE. So which is equal to 2 into 9.8 by 5 into 6400 into 10 to the power 3. So omega is equal to root under 19.6, 5 into 6400 into 10 to the power 3. So this is equal to so this is 7.8 into 10 to the power minus 5. 7.8 into 10 to the power minus 5 रेडियन पर सेकेंड. सो इस एंगुलर वेलोसिटी से इसको रोटेट होना होगा अगर पर्सन का वेट 3/5 ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू है. Is it clear? Yes, sir.
Now gravitational field, according to the field concept, जैसे electric field तुम लोग you all have studied electric field. So the space around the charge in which the force is exerted on any other charge is called electric field of that particular charge. Similarly, the space around a mass uh, where if any other mass is kept, it experiences a gravitational force is called the gravitational field of that particular mass. So according to the field concept, every mass modifies the space around it. So this modified space is called gravitational field. So when any other mass is placed in this field, it feels a gravitational force of attraction. So it feels a gravitational force of attraction due to its interaction with the gravitational field. So gravitational field in the region around a mass with which another mass can experience its gravitational force. So gravitational field intensity, the intensity of gravitational field at a point is the force acting per unit mass of a test particle kept at that point. Let F be the force on a test mass m0 placed at a point P in the gravitational field of some mass m. Then gravitational field intensity is given by force by mass. So basically gravitational field intensity क्या हो गया? Force per unit mass जो है, that gives you gravitational field intensity. So the direction of E is same as that of F, है ना? तो जिधर force का direction है उधर ही ये gravitational field intensity का भी direction है. Gravitational field intensity is a vector quantity. Unit of gravitational field strength is Newton per kg or meter per second square. Dimension is m0 l1 t minus 2. तो force को mass से divide कर दिया, तो that is the dimension of this gravitational field intensity. तो आप ये देखो कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का दोनों का यूनिट सेम है, ठीक है. Now gravitational field point due to point mass m, ठीक है. Now consider a point mass m, capital M. To determine its gravitational field intensity at a point P at a distance r, let a test mass small m, so test mass small m, which is very, very less than capital M, can be placed at a point P. Let F be the force of gravitation experienced by this test mass. The gravitational field intensity is F by M, that is gmm by r square. F is gmm by r square divided by m कर देंगे, है ना? तो ये small m और ये small m cancel हो गया, तो gm by r square हो गया basically. So when r is infinity, E is 0. Thus gravitational field intensity decreases as the distance r increases and becomes 0 at infinity. If the test mass m is free to move, it will move towards the mass capital M with acceleration as under the force F, that is F by m. So we get A is equal to E. Thus the intensity of gravitational field at any point is equal to free acceleration produced in the test mass when placed at that point. So ये जो acceleration, जो gravitational field intensity है, अगर अर्थ के केस में बात करें तो वो acceleration due to gravity के वजह से बराबर हो जाएगा. It's one and the same thing. तो ये हम लोग जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी पढ़ते हैं, this is a universal thing for any mass, not only for earth but for any mass. अर्थ या planet के लिए नहीं, हर जगह के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. Now as the distance r increases, gravitational field strength decreases. So r is equal to infinity, value of intensity of gravitational field becomes 0, which we have already seen. Now intensity of gravitational field at a distance r from the center of earth is gm by r square. So E at r, E is proportional to 1 by r square.
So we know that the gme by r square, earth ke case mein this is same as small g. So it is clear that intensity of gravitational field at any place is equal to acceleration due to gravity in case of earth. Now 2 point masses, each of mass small m, are placed at the corners of an equilateral triangle of side A, right? So let's say we have this equilateral triangle. So 2 point masses, each of mass m, are placed at the corners of an equilateral triangle of side A. Find the net gravitational field intensity at the third corner of the triangle. तो यहाँ पे gravitational field intensity इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे gravitational field intensity इस डायरेक्शन में है. दोनों का रिजल्टेंट जो होगा हम लोग वेक्टर एडिशन कर देंगे तो ये हमें दोनों का रिजल्टेंट पता चल जाएगा. सो ये हो गया gm by a स्क्वायर, इधर भी हो गया gm by a स्क्वायर, उसका रिजल्टेंट. अब बिकॉज ये जो इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा. सो ये जो रिजल्टेंट है, सो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी इक्वल टू 2gm by a स्क्वायर, है ना, इनटू cos ऑफ 30 डिग्री, है ना. इसका जो कंपोनेंट होगा gm by a स्क्वायर cos 30 डिग्री, ये भी gm by a स्क्वायर cos 30 डिग्री, दोनों को ऐड कर दोगे तो ट्वाइस ऑफ gm by a स्क्वायर cos 30 डिग्री. सो 2 times gm by a square cos 30 degree is √3 by 2. 2 और 2 cancel हो गया. So this becomes √3 gm upon a square. Is it clear? Yes, sir. Now next है, the distance between Earth and the Moon is about 3.8 into 10 to the power 5 kilometer, right? So Earth and Moon so this is Earth, this is Moon. Distance between Earth and Moon is 3.8 into 10 to the power 5 kilometer. At what point or points will the gravitational field strength of Earth-Moon system be 0? ठीक है, तो देखो मतलब कोई पॉइंट मान लो यहां से सेंटर ऑफ अर्थ से ये मान लो पूरा डिस्टेंस दिया हुआ है, इसको हम लोग d मान लेते हैं, और इससे अर्थ से r डिस्टेंस पे, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा, d माइनस r हो जाएगा. इसके मून और इस पॉइंट का डिस्टेंस और इसका और इसका. तो इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इधर है, इस पॉइंट पे मून की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इधर होगा. दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जहां बैलेंस करेगा वहां नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाएगा. इज इट क्लियर? और क्या दिया हुआ, मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स द मास ऑफ मून. सो देखो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अर्थ इज gme by r square is equal to g mass of moon divided by d minus r का होल स्क्वायर. ये जो डिस्टेंस है इसका इस पॉइंट से d minus r. सो और मास ऑफ अर्थ इज 81 टाइम्स मास ऑफ मून. ये कैंसिल कर दो, g और g कैंसिल हो गया, राइट. So mass of Earth is
81 times mass of moon by r square is mass of moon by d minus r का whole square. Mass of moon cancel हो गया, so d minus r का whole square is equal to into 81 is equal to r square. Square root ले लोगे तो 9 times d minus r is equal to r. So 9d is equal to 10r, or r is equal to 9 by 10 into d, which is equal to 0.9 into 3.8 into 10 to the power 5. ठीक है, तो 0.9 into 3.8. So this is 3.42 into 10 to the power 5 kilometer from Earth. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Now, intensity of gravitational field due to hollow spherical cell. ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल, यहाँ पे अगर हॉलो है स्फेरिकल सेल, लेट m इज द मास ऑफ स्फेरिकल सेल. ठीक है, r इज द रेडियस ऑफ द सेल. R is the radius of the cell. E is the gravitational field intensity at distance r from the center of the cell. ठीक है, सो यहाँ पे सेंटर R से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, सेंटर ऑफ द सेल से जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस R पे E है. सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सेल एट पॉइंट P. अब P अगर R ग्रेटर देन R है, मतलब कोई एक्सटीरियर पॉइंट पे अगर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, so if we have to find the gravitational field intensity at a point P which is exterior to this shell means which is empty from inside, okay, hollow spherical cell. So यहाँ पे अगर हम लोग को P point पे निकालना है, so this whole mass will act as a point mass located at the center of this spherical cell, and this gravitational field intensity will be minus gm by r square. Negative sign just tells you the sign, the direction is towards the center, and that's why negative sign. And gravitational field intensity at the surface of the cell, P dash point pe, surface of the cell, it will be maximum, that is minus gm by r square. And inside the spherical cell, when I take this point P double dash, there is no mass which is inside this. Zero. हाँ, तो ये zero हो जाएगा inside the spherical cell. This will be zero. जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कॉन्सेप्ट में भी करते हैं, चार्ज अंदर कुछ भी नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, उसी तरह मास कुछ भी नहीं है तो ग्रेविटेशनल फील्ड वहां पे जीरो होगा. सो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी inside the cell at P dash, that is R less than R, is equal to 0. Now variation of gravitational field intensity with distance from the center of the cell. So यहाँ पे E is 0. Here it is minus gm by r square. और outside वो फिर धीरे धीरे decrease करता जाएगा. So this is the graph basically for gravitational field intensity. Now intensity of gravitational field due to solid sphere. So m is the mass of solid sphere and r is the radius of the sphere. E is gravitational field intensity at distance r from the center of the sphere. So
सो अब सॉलिड स्फीयर के वजह से अगर हम लोग देखें, ये बहुत ज्यादा अभी बाकी है। हम लोग क्या करते हैं कि ये जो स्फेरिकल सेल तक करते हैं, सॉलिड स्फीयर वाला पोर्शन हम अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्फीयर के आगे वाला पोर्शन, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सॉलिड स्फीयर का बाकी है, रिंग का बाकी है, डिस्क का बाकी है, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और उसके हाँ जी, हाँ जी सर, पिछली क्लास की पीडीएफ जरूर सेंड कर दीजिए सर। दोनों सेट सेंड कर दूँ, ये वाला भी पिछली क्लास का, ठीक है। ओके, ठीक, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, बाय, ठीक है। आगे हम लोग कल करेंगे इसके। ओके सर।